Hello everyone, good afternoon, welcome to my channel. So in this lecture we will discuss the most important property of Laplace transformation, that is derivative of Laplace. मतलब we will find out Laplace transformation of derivative of a function. So make sure you know all the basic formula of Laplace transformation, like Laplace of cos t, Laplace of sin t, Laplace of e to the power a t, Laplace of constant, so on. So that statement क्या है देखो, f of t is a function. So statement क्या है, if Laplace of f of t is equal to f bar s, that is as per the definition, then Laplace of derivative of that function, मतलब d by dt of that function is equal to s into f bar s minus f naught. देखो ये small f है, ये capital F. So what is the significance of f naught? I'll explain while solving a numerical. Or else I can write Laplace of d by dt of ft, I can write down f bar t, that is s into f bar s minus f naught. Let us take an example. We'll find out Laplace of sin t. Let our function is, मान लो कि function is sin t by t. So we'll find out Laplace of f dash t, मतलब Laplace of differentiation of sin t by t. I'll explain in detail how to solve it. So इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, f of t will be given to you, have to find out Laplace of derivative of that function. So before going to this question, let us derive that formula. ये जो theorem है इसका derivation देखो. Okay, the statement क्या है, Laplace of f dash t is equal to s into fs minus of f naught. So first we will take LHS part. LHS में क्या है, Laplace of f dash t. So as per the definition of Laplace transformation, I can write down here integration from 0 to infinity e to the power minus st into that factor. So here factor is f dash t into dt. Again I repeat, as per the definition of Laplace transformation, Laplace of any function is equal to integration from 0 to infinity the e to the power st into that function into dt. Here function is f dash t. Okay, so original function is ft. So if we'll integrate this part, if we'll integrate, you can apply integration of uv by parts apply करो. So ये क्या है, u into integration of v minus integration under bracket differentiation of u into integration of v, then bracket end करो, then dx. ठीक है, सेम मेथड अप्लाई करो इधर. ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है. सो ये u, ये v, राइट. सो e टू द पावर माइनस st देखो इनटू इंटीग्रेशन ऑफ f डैश t इनटू dt माइनस इंटीग्रेशन अंडर ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ u. डिफरेंशिएशन ऑफ u मतलब d बाय dt ऑफ e to the power minus st into integration of second term, that is v, then bracket end करो, then dt. ठीक है. So I can write down here e to the power minus st. देखो ये इंटीग्रेशन, ये 0 to infinity, लिमिट देखो 0 to infinity. देखो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन पार्ट विल बी कैंसल. हियर इंटीग्रेशन f dash is differentiation, so integration differentiation part is cancel, only ft is left. ठीक है, माइनस इसमें लिमिट डाल दो, लिमिट क्या है 0 to infinity. तो इसमें देखो डिफरेंशिएशन ऑफ e to the power minus st क्या है, e to the power minus st into minus s, इसमें ब्रैकेट दे दो. ठीक है, into इंटीग्रेशन ऑफ f dash t क्या है, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन विल बी कैंसल, ओनली ft is left into dt, then integration of that function. यहाँ तक क्लियर. सो हियर आई एम राइटिंग, देखो ये फर्स्ट फंक्शन क्या है, फर्स्ट पार्ट क्या है, e टू द पावर माइनस st. इधर लिमिट अप्लाई करो, देखो e टू द पावर इंफिनिटी, t में इंफिनिटी पुट करो, माइनस t में 0 पुट करो, मतलब ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी
इंटू एफ इंफिनिटी माइनस टी में जीरो पुट करो, मतलब e टू द पावर जीरो एफ ऑफ जीरो। क्लियर, ये फर्स्ट पार्ट आ गया। देन माइनस ये सेकेंड पार्ट क्या है, e टू द पावर माइनस एस टी। देखो ये माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो एट ए टाइम आई एम राइटिंग प्लस, देन ये क्या हो जाएगा, एस ई टू दी इंटीग्रेशन ई टू दी पर माइनस एस टी, एस बाहर ले आओ, ये तो एस बाहर कांस्टेंट है। सो ई टू दी पर माइनस एस टी इंटू एफ टी इंटू क्या है डी टी, एंड लिमिट इज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। ध्यान से देखो ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर इन्फिनिटी, ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी क्या है जीरो, एंड ई टू दी पावर जीरो क्या है, ई टू दी पावर जीरो इज वन, मतलब एफ नॉट इज लेफ्ट। ठीक है, प्लस एस इंटू, देखो as per the Laplace definition of Laplace, e to the power minus st ft into dt क्या है Laplace of ft। so Laplace of ft को I can write down f bar s, so I can write down f bar s here। so your final answer is s into f bar s minus f naught। ठीक है, so that is your RHS, मतलब what we are getting as per the theorem, मतलब Laplace of derivative of a function is equal to s into fs minus f naught। so how to find out f naught, I'll explain through a example। so let us take a example। so example क्या है, let f of t is sin t by t and we'll find out Laplace of f dash t। f dash t मतलब Laplace of d by dt of ft। so as per the theorem, क्या theorem, s into fs minus f naught। ये fs एक्चुअल क्या है, fs is Laplace of that function sin t by t। so first we'll find out Laplace of sin t by t, then we'll find out f naught। so first we'll find out Laplace of sin t by t। so ये देखो डिवीजन हुआ है sin t upon t, you apply division theorem। so मतलब फर्स्ट यू फाइंड आउट लैप्लेस ऑफ साइन टी। लैप्लेस ऑफ साइन टी क्या है, वन बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज वन बाई ए स्क्वायर, सॉरी ए बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए मतलब यार वन, वन बाई ए स्क्वायर प्लस वन। देन लैप्लेस ऑफ साइन टी बाई टी क्या होगा, डिवीजन रूल अप्लाई करो, क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम एस टू इंफिनिटी वन बाई ए स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एस, राइट, ये डिवीजन रूल है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला याद रखो, वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये क्या है, वन बाई ए टैन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। सो इधर ए इज वन, मतलब योर आंसर इज वन बाई वन टैन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स इज एस, मतलब टैन इनवर्स दिस वन। so here it is tan inverse of s, so final answer I am लिख रहा हूँ tan inverse s। ठीक है, सो हाँ लिमिट भी डालना है, लिमिट क्या है, जीरो टू इन्फिनिटी। सो हियर tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस क्या है, tan इनवर्स जीरो, tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या है, पाई बाई टू माइनस, सॉरी tan इनवर्स एस टू इन्फिनिटी, ये लिमिट क्या है, एस टू इन्फिनिटी, मतलब tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स एस। सो tan इनवर्स इन्फिनिटी इज पाई बाई टू माइनस tan इनवर्स क्या है, एस। ठीक है, and you know from trigonometric tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi by 2, so tan inverse x minus pi by 2 is cot inverse x, so I can write down here cot inverse s। ठीक है, so Laplace of this one you are getting cot inverse of s। so मतलब ये जो पार्ट है this is your fs और f dash s, मतलब ये s इंटू क्या है, cot inverse of s minus of f naught। so now the second part of the question is to find out f naught। f naught कैसे निकालोगे, देखो f naught के लिए पहले तुम फंक्शन लिखो, f of t क्या है, f of t is sin t by t। so t में t इक्वल टू जीरो पुट करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो क्या आंसर आ रहा है, साइन जीरो बाई जीरो,
साइन जीरो इज जीरो, जीरो बाई जीरो डिफाइन नहीं हो रहा है, अनडिफाइंड, दैट्स वाई अगेन यू डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन यू पुट t इक्वल टू जीरो। देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या है, cos t, एंड t का डिफरेंशिएशन क्या है 1, सो मतलब योर आंसर इज cos t, then again you put t is equal to 0, then cos 0 क्या है 1, मतलब ये डिफाइन है, मतलब that value is defined, so here f naught is your 1, so final answer is s into cot inverse s minus 1, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। Let our function is f of t is 1 minus cos 2t by t. So we'll find out Laplace of f dash t. F dash t मतलब derivative of ft. That is Laplace of d by dt of 1 minus cos 2t by t. That we'll find out. That is our purpose. So as per the definition, as per the theorem of Laplace of derivative of a function, as per the theorem it is what, s into fs minus f naught और f of 0. so ये कैपिटल एफ एस, ये एफ एस एक्चुअली क्या है, लैप्लेस ऑफ दैट फंक्शन, मतलब लैप्लेस ऑफ f of t, that is Laplace of 1 minus cos 2t by t. That part first we'll find, then we'll discuss about f naught. So we'll find out Laplace of 1 minus cos 2t by t. तो ये देखो, ये डिवीजन, इफेक्ट ऑफ डिवीजन ऑन लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन, वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। सो मतलब we'll find out Laplace of 1 minus cos 2t by t, again I am writing here, okay, so ये एक्चुअली आपका f of s, so we'll find out Laplace of this part, apply effect of division on Laplace transformation. So first you find Laplace of 1 minus cos 2t. Laplace of 1 minus cos 2t क्या है, 1 का Laplace क्या है 1 by s minus cos 2t का Laplace क्या है s by s square plus s square, a is 2, मतलब s by s square plus 4, ठीक है। सो देन Laplace of 1 minus cos 2t by t क्या होगा, इफेक्ट ऑफ डिवीजन अप्लाई करो, इंटीग्रेशन फ्रॉम s to infinity, again I repeat, whenever you are applying effect of division on Laplace transformation concept, then you have to take integration from s to infinity, not from 0 to infinity, s to infinity of that part, 1 by s minus s by s square plus 4 into ds, ठीक है। 1 by s का इंटीग्रेशन क्या है ln s माइनस ये पार्ट का इंटीग्रेशन क्या, देखो ये इंटीग्रेशन ऑफ s बाई एस स्क्वायर प्लस 4, एक काम करो 2 मल्टीप्लाई करो 2 डिवाइड करो, तो ये कंप्लीट पार्ट का इंटीग्रेशन क्या होगा ln s स्क्वायर प्लस 4। क्यों, देखो मैंने एक चीज बोला था आई थिंक लास्ट क्लास, अगर डिनोमिनेटर में एक फंक्शन होगा fx, न्यूमरेटर में अगर उसका डेरिवेशन होगा f डैश x, इफ विल इंटीग्रेट द एंटायर पार्ट योर आंसर इज ln fx। सो मतलब इसमें देखो s स्क्वायर प्लस 4 इज fx, लेट, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है 2s, अगर ये फॉर्मेट में होगा देन इंटीग्रेशन ऑफ दैट एंटायर पार्ट इज ln ऑफ fx, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या हो, इसका टोटल इंटीग्रेशन क्या होगा ln s स्क्वायर प्लस 4, मतलब हियर आई कैन राइट डाउन हाफ इज देयर, देन ln s स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, ओके यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट, so you take half as common, then ln 2 into ln s minus ln s square plus 4, then I can write on half ln s to the power 2 minus ln s square plus 4, ठीक है। here you apply ln x minus ln y formula, देखो हाफ इंटू ln x माइनस ln y क्या है ln x बाई y, मतलब ln s स्क्वायर बाय s स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। हाँ, डोंट फॉरगेट टू मेंशन दैट लिमिट इन्फिनिटी टू क्या था, सॉरी s टू इन्फिनिटी, ठीक है, ओके। सो हियर हाफ इंटू, इसमें s में इन्फिनिटी डालो माइनस s में s डालो, तो मतलब ln इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है, माइनस ln
स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। सो इट इज कमिंग ln 1 माइनस ln स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस 4, ln 1 is 0, so it is half 0 minus ln square by square plus 4। देखो तो फाइनल आंसर क्या है, माइनस हाफ ln स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस 4। अगर माइनस को हटाओगे देन क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा, तो हाफ ln स्क्वायर प्लस 4 बाय स्क्वायर। सो ये फाइनली क्या मिला, लैप्लेस ऑफ 1 माइनस कॉस 2t बाई टी। सो दैट मीन्स एफ एस वी आर गेटिंग कितना मिला, हाफ इंटू ln स्क्वायर प्लस 4 बाय स्क्वायर, ठीक है। So that means we are getting Fs as this half into ln square plus 4 by 4. Next coming to this part, F naught. How to find out F naught? F naught के लिए क्या करोगे, देखो फर्स्ट यू राइट दिस फंक्शन। ये फंक्शन क्या है, ओरिजिनल फंक्शन 1 माइनस cos 2t by t। देन यू पुट t is equal to 0, चेक करो f of t कितना आ रहा है। f of t is coming 1 माइनस cos 0 कितना है, 1 by 1। सो t is 0 ना, 0, सो मतलब 0 by 0 आ रहे हैं, तो 0 by 0 is not defined, तो hence that's why what you'll do, again you differentiate this part, numerator and denominator। if you differentiate then आंसर क्या आ जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस cos 2t का डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस 2 इंटू साइन 2t बाय t का डिफरेंशिएशन क्या है, 1, ठीक है। सो फाइनली आंसर माइनस माइनस तो प्लस है, तो फाइनल आंसर इज 2 sin 2t। देन यू पुट t इज इक्वल टू 0। देखो फर्स्ट टाइम तो पुट किया था, अभी सेकंड टाइम भी पुट करो, इसमें पुट करो t इज इक्वल टू 0। सो ये आंसर क्या है, 2 इंटू साइन 0, साइन 0 इज 0। सो मतलब 0 इज डिफाइंड, ये तो डिफाइंड है ना, ठीक है। सो मतलब फाइनल आंसर एफ नॉट, एफ ऑफ 0 इज कमिंग 0, ठीक है। सो आई विल राइट हियर फाइनल आंसर, हियर आई एम राइटिंग एस इंटू एफ एस क्या है, हाफ ln स्क्वायर प्लस 4 बाई स्क्वायर माइनस एफ नॉट क्या है, 0। सो ये आपका फाइनल आंसर, ओके। So with this I am ending this lecture. Hope you guys understood what I have explained today. So whenever you are dealing with differentiation of Laplace transformation, make sure you know all the basic or standard formula of Laplace transformation, and the effect of division is very important. Then in coming class we will discuss Laplace of integral क्या होता है, ठीक है। So all the best. Thank you so much for watching my video. Thank you.